So now we are going to start with a new concept, and the name of the new concept is called beta of unlevered equity. Let us have understanding of that concept, say with this question. आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना ही है. X Limited is providing following information. Currently, it is doing business of manufacturing of the machine tools. It has 40% debt in the capital structure. Its equity beta is 1.25. Now, this company is diversifying into a new line of the business. And new line of the business is manufacturing of the mobile phone. The proxy firm is NOKIA company. The proportion of the debt in capital structure is 30%. Its equity beta is 1.12. Return on the market portfolio दे रखा है 25, RF risk free rate of return दे रखा है 10. X Limited is going to keep 25% debt in the capital structure for new line of the business. 35% debt in the capital structure for new line of the business. Calculate required rate of return for X Limited from the new line of the business. That is a question. I just request all of you to go through the question. फिर हम लोग discuss करते कि कैसे करने का. तो question is providing the information that say there is a company called X Limited. And it is right now say in the business of manufacturing of the machine tools. उनको लग रहा है that say manufacturing of the mobile phone is a good line of the business, so they are considering to enter into that line of the business. And we understand something like this, that whatever the required rate of return that X Limited has from the existing business, whether X Limited will have the same required rate of return from the new line of the business, give answer in the chat box. We understand that say the pros and cons of the each line of the business is different. So जो अभी का required rate of return है वही का वही नए line of the business का नहीं है. नए line of the business का required rate of return क्या होगा? अलग होगा. It depends upon the risk of that line of the business. We understand that say the market में बहुत सारे business है, starting with the pharma business, banking business, automobile industry, electronic appliances business and so on. Now ये सारे businesses का risk level same होता नहीं है, हर एक का business risk अलग अलग है. That is the reason से जो अभी का हमारा required rate of return है वही का वही नए business का हो सकता नहीं है. अच्छा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? We understand that say we are required to take help of proxy details. We are required to take help of proxy firm details. Proxy firm का मतलब क्या है सर? Proxy firm का मतलब ये है कि ऐसी एक कंपनी जो हमारे जैसी ही है and they are doing business in that new line of the business. यानी कि suppose we are a listed company, तो ऐसी एक listed company जो वो line of the business में काम कर रही है उसको बोला जाता है proxy firm. तो हमारे एग्जाम्पल में से द नोकिया कंपनी इज गिवन एज अ प्रॉक्सी फर्म. अच्छा, सो द नोकिया कंपनी इज से अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी फॉर अस से टू एस्टिमेट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क दैट से वी हैव से इन दैट न्यू लाइन ऑफ द बिजनेस. वो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. Over here, it has been given to us that say the NOKIA company का debt proportion कितना है capital structure में, और फिर हमको ऐसा दे रखा है that से उनका equity beta क्या है वो हमको question में दे रखा है. Using the proxy firm details, we are required to make the calculation of risk adjusted discounting rate. One important thing that say we understand is like this. Listen carefully. See, on x-axis I am taking proportion of the debt financing in capital structure, and on y-axis I am taking the cost of capital. When there is no debt financing, at that time cost of equity and weighted average cost of capital is same.
ना जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, डेट फाइनेंसिंग बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो प्रॉक्सी फर्म है उनका डेट फाइनेंसिंग कितना है, उनका डेट फाइनेंसिंग है 30%। सो दिस 30% डेट फाइनेंसिंग में उनका इक्विटी बीटा कितना है, 1.12 है। 30% डेट फाइनेंसिंग में उनका इक्विटी बीटा कितना है, 1.12 है। We understand that, so listen carefully. Using these details, we will make first of all the calculation of what is the beta of unlevered equity. Beta of unlevered equity का मतलब क्या है वो आप समझो। अनलीवर्ड का मतलब क्या हुआ, नो डेट। यानी हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे डेट से सपोज कि ये नोकिया कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो उनका बीटा ऑफ द इक्विटी क्या होता। उसके बाद से हम लोग जितना कैपिटल स्ट्रक्चर रखने वाले, हम लोग जितना डेट फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में रखने वाले, उस हिसाब से वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी। जैसे कि हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे रखा है कि हम लोग 25% रखने वाले, सेकेंड पार्ट में दे रखा है हम लोग 35% रखने वाले। तो जिस हिसाब से हम लोग डेट फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में रखने वाले हैं, उस हिसाब से हमारा बीटा ऑफ इक्विटी क्या होगा उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। एंड देन वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला एस आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10, रिटर्न ऑन मार्केट क्या है, 25। and so we understand that say these two information will be used to make the calculation of the cost of equity. चलो heading right down, beta of unlevered equity. In that write down first point, whenever a company is diversifying into a new line of business, comma, in that case it is required to calculate risk adjusted required rate of return from new line of business. Second point, proxy form means a firm doing similar business in which we are entering into.
full stop. Third, taking into account capital structure of proxy firm and its equity beta we can find beta of unlevered equity. Full stop. It means such beta when debt financing is zero. Full stop. Afterwards, taking into account capital structure of diversifying firm we have to compute risk adjusted required rate of return. Risk adjusted required rate of return. Full stop. With paragraph write down. When there are no taxes, comma, beta of unlevered equity स्लैश उसका एक दूसरा नाम भी है बीटा ऑफ असेट is calculated as under. तो अगर टैक्स नहीं है तो बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी उसको बीटा ऑफ द असेट या तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो असेट भी बोला जाता है. उसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. इट इज बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट यानी सिंपल वेटेड एवरेज. जैसे हम लोग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो करते हैं ना वैसे दैट इज इक्विटी का बीटा मल्टीप्लाइंग इट्स विद इट्स वेट और डेट का बीटा मल्टीप्लाइंग विद इट्स वेट. लीवर्ड इक्विटी का मतलब क्या होता है? डेट फाइनेंसिंग है. बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी स्टैंड्स फॉर व्हेन देयर इज डेट फाइनेंसिंग. And this is beta of debt. This is weight of equity.
and this is weight of debt. Chalo, let us answer the question. Step number 1, calculation of beta of unlevered equity using proxy firm information. So it will be calculated as beta of levered equity into weight of equity plus beta of debt into weight of debt. जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है नोकिया कंपनी के बारे में, उनका डेट फाइनेंसिंग है 30%, तो इक्विटी 70% हो गया. सो दिस इज 1 माइनस 0.3, तो ये क्या हो गया 0.7. बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी कितना है 1.12, दिस इज 1.12 into 0.7, that is 0.784. So it is 0.784. Step number 2, calculation of beta of levered equity. Just a minute. Beta of debt is 0, its weight is 0.3. Because in absence of information, its beta is taken as 0. So beta of levered equity for X limited. Now X limited जो नया लाइन ऑफ द बिजनेस कर रहा है, उसके लिए उनका बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी क्या होगा वो हमको फाइंड करना है. So beta of unlevered equity is equal to beta of levered equity into weight of equity, beta of debt into weight of debt. So this is 0.784. बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी हमको पता नहीं क्या है, उसका वेट कितना है. क्वेश्चन में दे रखा है 25% डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये 75% हो जाएगा. ऐसा किया जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 0.7840, .75 into बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी, और दूसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा. .7840 divided by 0.75. So the answer is 1.0453. That is the way the beta of levered equity is calculated. Step number 3, calculation of weighted average cost of capital और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ केडी, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग. ना हम लोग जो डिबेंचर्स इश्यू करने वाले हैं उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ये रखा है, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे दैट वी विल इश्यू द डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10%. The right answer, assuming that
debentures are issued at risk-free rate of return comma KD is calculated. So it is ROI into 1 minus T. Rate of interest is 10. Income tax rate is 0. So cost of debt financing is 10. Working note number 2. Calculation of K. RF plus beta into RM minus RF. What is risk-free rate of return? It is 10. Beta is 1.0453. Return on the market portfolio is 25, RF is 10. $1.0453 into 15%. 1.0453 into 15%. That comes to 15.68. So it comes to 25.68. That is the way the K is calculated. उसके बाद calculation of weighted average cost of capital, cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt. तो K कितना है 25.68. Weight of equity कितना है 0.75. KD is 10 and weight of debt financing is 0.25. So 25.68 into 0.75. So 19.26 plus 2.5. That comes to 21.76. तो ऐसा करके हमको 3 स्टेप में आंसर कैलकुलेट करना है. Step number 1 में calculation of the beta of unlevered equity using the proxy firm information, जिसमें सिंपल वेटेड एवरेज फॉर्मूला ही अप्लाई करना है. अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, टैक्स है तो क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सेकेंड स्टेप में हमको बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी फाइंड करना है एक्स लिमिटेड के लिए, कंसीडरिंग दैट से वो लोग 25% डेट रखने वाले हैं. उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले केडी फाइंड करेंगे, के कैलकुलेट करेंगे और फिर वेटेड एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, if 35% debt in the capital structure, then what will be the weighted average cost of capital?